school year was ending at Dartmouth Academy. In one corner, there was Bertha. She was laughter and sunlight, always surrounded by a bright, buzzing crowd of friends. And then there was Grace. She sat alone in the quiet, dusty part of the classroom, small and still, like a forgotten shadow as the desks emptied around her. Summer stretched ahead, vast and empty. Bertha clutched a heavy, cream-colored envelope. It held the promise of her favorite thing in the world. A whole summer at Riversdale, the beautiful countryside home of her wonderful Aunt Meg. Riversdale. The very name sounded like peace. It had a river for skipping stones, a great oak tree for reading, and the most comforting silence in the world. That afternoon, Bertha saw Grace, alone again, slowly packing a small, worn bag. Grace looked tired, and the quiet loneliness around her felt as big as the coming summer. Bertha knew her choice immediately. It felt like a heavy stone rolling away, leaving a space filled with a strange, quiet warmth. She took out her prettiest stationery and began to write. A week later, a heavy, cream-colored envelope landed on Grace's thin mat. Inside was the Riversdale invitation, along with a short, kind note that simply said, "It's waiting for you, -B." Grace arrived at Riversdale. The silence here wasn't empty. It was full of birdsong and the soft murmur of the river. Aunt Meg greeted her with a hug that felt like a promise of safety. She spent her days reading under the great oak, collecting smooth, skipping stones, and learning the names of flowers. The silence of the summer began to fill her up, replacing the lonely quiet she had known. The greatest gift, though, was Aunt Meg. She simply saw Grace, not the quiet girl, but the bright, funny friend hidden inside. They laughed, shared stories, and became the family neither knew they needed. When Grace returned to Dartmouth Academy, she was still quiet, but her quiet was different now. It was a settled calm. Aunt Meg's look held a secret. Grace wouldn't be leaving Riversdale again. Bertha stayed home, but her summer was full of sunshine anyway, especially when a letter arrived from a happy, restful Grace. She knew her sacrifice hadn't cost her anything. It had given her a quiet, enduring happiness. डार्टमाउथ अकादमी में स्कूल का साल खत्म हो रहा था। एक कोने में बर्था थी। वो हंसी और धूप की तरह थी, जो हमेशा दोस्तों की एक उज्ज्वल, उत्साहपूर्ण भीड़ से घिरी रहती थी। और फिर ग्रेस थी। वो कक्षा के शांत, धूल भरे हिस्से में अकेली बैठी थी, छोटी और स्थिर, एक भूली हुई छाया की तरह, जैसे उसके आसपास की डेस्क खाली होती जा रही थी। गर्मियां सामने फैली हुई थी, विशाल और खाली। बर्था ने एक भारी क्रीम रंग का लिफाफा कसकर पकड़ रखा था। इसमें उसकी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज का वादा था, रिवर्सडेल में एक पूरी गर्मी, जो उसकी अद्भुत चाची मेग का सुंदर देहाती घर था। रिवर्सडेल इस नाम से ही शांति की ध्वनि आती थी। इसमें पत्थर उछालने के लिए एक नदी थी, पढ़ने के लिए एक विशाल बलूत का पेड़ था और दुनिया की सबसे सुकून देने वाली शांति थी। उस दोपहर बर्था ने ग्रेस को फिर से अकेला देखा, जो धीरे धीरे एक छोटा पुराना बैग पैक कर रही थी। ग्रेस थकी हुई लग रही थी और उसके आसपास का शांत अकेलापन आने वाली गर्मी जितना ही बड़ा महसूस हो रहा था। बर्था को तुरंत अपना चुनाव पता चल गया। ये एक भारी पत्थर के लुढ़क जाने जैसा महसूस हुआ, जिससे एक अजीब शांत गर्मजोशी से भरी जगह बन गई। उसने अपनी सबसे प्यारी स्टेशनरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद ग्रेस की पतली चटाई पर एक भारी क्रीम रंग का लिफाफा गिरा। अंदर रिवर्सडेल का निमंत्रण था, साथ ही एक छोटा दयालु नोट भी था, जिसमें बस इतना लिखा था, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है, -B। ग्रेस रिवर्सडेल पहुंची। यहाँ की चुप्पी खाली नहीं थी, ये पक्षियों के गीत और नदी की धीमी कलकल से भरी हुई थी। चाची मेग ने उसे गले लगाकर स्वागत किया, जो सुरक्षा के वादे जैसा महसूस हुआ। उसने अपने दिन विशाल बलूत के नीचे पढ़ने, चिकने, उछलते पत्थरों को इकट्ठा करने और फूलों के नाम सीखने में बिताए। गर्मी की शांति उसे भरने लगी, उस अकेलेपन की जगह ले रही थी जिसे वो जानती थी। हालांकि सबसे बड़ा उपहार चाची मेग थी। उन्होंने बस ग्रेस को देखा, न कि शांत लड़की को, बल्कि उसके अंदर छिपी उज्ज्वल मज़ेदार दोस्त को।
वे हंसे कहानियां साझा की और वो परिवार बन गए जिसकी ज़रूरत दोनों को पता नहीं थी। जब ग्रेस डार्टमाउथ अकादमी लौटी तो वो अभी भी शांत थी, लेकिन उसकी चुप्पी अब अलग थी। ये एक बसी हुई शांति थी। चाची मेग की नज़र में एक रहस्य छिपा था। ग्रेस अब रिवर्सडेल नहीं छोड़ेगी। बर्था घर पर ही रही, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी धूप से भरी थी, खासकर जब एक खुश आराम की हुई ग्रेस का एक पत्र आया। वो जानती थी कि उसके बलिदान ने उसे कुछ भी खर्च नहीं किया था, इसने उसे एक शांत स्थायी खुशी दी थी।